Hello everyone, welcome back. I hope you all are staying strong at your home. So we are doing chapter 4, An Ideal Home. As we are done with the discussion of this chapter, we will continue with something to know. And today we will do part A, which is tick the correct option, B, which is fill in the blanks, C, that is match the following. That's it. इतना ही करेंगे आज हम. So let's continue with A part, tick the correct option. The very first part in tick the correct option is that the dustbin must be cleaned. Options are every day, every week, every month. So correct answer is every day. The dustbins must be cleaned every day. Now question number 2 is, it is a job of dash to keep the surroundings clean. Options are animals, mothers or citizen. So the correct answer is citizens. Okay, see, animals तो surrounding को clean नहीं रख सकते. They are animal. That's why they are called animals. Mothers की ही duty नहीं है cleanliness को maintain करना. Rather, it is a duty of each and every citizen of the country that they should keep their country, their surrounding neat and clean. Especially in present pandemic situation, cleanliness is very, very important. Next, the third part is our homes need sunlight to dash them. Options are brighten, refresh or both. So answer is both A and B. Brighten and refreshment दोनों ही चीज़ों के लिए हमें sunlight की requirement होती है. Now number 4 is the kitchen and the bathroom must have a proper system of options. A, worker, B, drainage, C, none. So basically the question is saying कि हमारा जो किचन और बाथरूम होता है उसमें प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्या रिक्वायर्ड होता है. वर्कर्स के लिए प्रॉपर सिस्टम रिक्वायर्ड होता है या ड्रेनेज के लिए या किसी भी चीज़ के लिए नहीं है. सो बेसिकली इट इज़ द ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि किचन और बाथरूम में दिन भर फ्रॉम द मोमेंट वी एंटर इनटू द बाथरूम एंड द मोमेंट वी एंटर इनटू द किचन वी नीड वाटर. सो वाटर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए. एनीवे it may cause diseases. Now next is, what can be caused by open garbage bin in the street? Street में, गलियों में जो ओपन खुले ढक्कन वाले जो डस्टबिन्स होते हैं, गार्बेज बीन्स होते हैं, वो क्या कॉज कर सकते हैं? वो फ्रेश एयर तो डेफिनेटली नहीं देंगे. परफ्यूम कभी भी उनमें से नहीं आएगा. rather bad odor, it will start stinking. So option C, foul smell is the correct answer. So the garbage bin in the street causes foul smell. Next is fill in the blanks. Very first part is the sunlight keeps the dash away. So it is germs. Sunlight जो है उसमें anti germ property भी होती है. ये सिर्फ हमारे घर को brighten and refresh ही नहीं करता है, ये हमारे घरों को, it is a natural disinfectant. Now number 2, a house can be converted into an dash home. Yes, a house can be converted into an ideal home by keeping few features in mind, like proper sunlight, proper ventilation, sanitation facilities, water supply should be proper there, cleanliness should be maintained, garbage disposal should be on a regular basis, and the safety of the resident is another important feature. So any house can be converted into ideal home by keeping these features in mind. Now number 3, every dash should have a lid. Every dustbin should have a lid. वरना डस्टबिन में we all know wet waste जो होता है उसमें mosquitoes और flies बहुत जल्दी attracted हो जाती हैं, तो इसलिए डस्टबिन के ऊपर lid होना is very much required. Now number 4, the doors should have dash and locks. So the doors should have bolts and lock. जो हमारी कुंडियाँ होती हैं, they are very much required. Now number 5, we are all responsible for protecting the dash environment. So we are all responsible for protecting the natural environment. Now question number C is match the following. So first is windows. Windows को हम फ्रेश एयर के साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि विंडोज़ के थ्रू फ्रेश एयर जो है अंदर आती है हमारे घरों में.
नेक्स्ट इज फ्लाई मैश. तो फ्लाई मैश हमारे जो डोर्स होते हैं, डोर्स में फ्लाई मैश लगा हुआ होता है. गार्बेज, गार्बेज कॉजेस डिजीजेस. प्लांट, प्लांट तो ट्रीज हैं, राइट. प्लांट को हम ट्रीज के साथ, प्लांट ग्रो करके ट्रीज बनती हैं. नेबर्स, नेबर्स के साथ तो हमेशा हार्मनी में ही रहना चाहिए. ओके, सो द करेक्ट ऑर्डर इज 1 के साथ है C, 2 के साथ है A, 3 के साथ है E, 4 के साथ है B, 5 के साथ है D. और अगर ABCDE के साथ हम लोग सीक्वेंस देखें तो इट इज 2 4 5 1 5 3. So this is all for today. Bye bye. Take care everyone.